Hello students, welcome to my channel. Myself Rajiv Maurya from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Student, in this class we are going to discuss the chapter number 4, linear equation. Okay, we are going to discuss more about linear equation. In the last video we have discussed basic terms that used in order to study the linear equation, and I hope you got everything clearly. So I hope there is no any doubt in the last video. Today we shall discuss some method to get the solution of linear equation, as well as also we shall discuss some question. So I hope that you would like this video as usual. So student, let's start. In the last video, we have already discussed about the solution of equation, and the definition was the numerical value of the variable of the equation for which left hand side become equal to right hand side is called solution of the equation. And we have already discussed a method in our previous class which was known as error and trial method. Error and trial method. And I hope you got everything that we have discussed in our previous class. So here we shall discuss a new method for finding the solution of the linear equation, which is called simultaneous operation method on both sides. Okay, simultaneous operation method on both sides. So let us see what does this method says. Okay, so this method we use in order to separate the variable of the given equation using the same operation on the both side. Okay, which keep the value of the equation remain unchanged. Okay, so here the meaning of this method is given as: in order to solve the equation, the variable must be isolated. This is done by carrying out some operation on both sides of the equation to keep the equation unchanged. That is, when we use this method, the value of the equation will not change. Okay, so this is the simultaneous operation method. इसका ये मतलब होता है कि हमें इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने का ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें हम इक्वेशन के बोथ साइड में सेम ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, जिससे कि जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट क्वांटिटी से आइसोलेट हो जाता है, दैट इज सेपरेट हो जाता है। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में जो वैल्यू होती है इक्वेशन की वो भी अनचेंज्ड रहती है। तो इसी को हम साइमल्टेनियस ऑपरेशन मेथड ऑन बोथ साइड कहते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। So here a given example is x plus 6 is equal to 17. Okay, so given is x plus 6 is equal to 17. We have to separate the variable x in such a manner by carrying out the same operation on the both sides. So in order to separating this variable, we have to observe that which quantity is operated with this variable. So in this question we can see that 6 is added with the variable x. So in order to distinguish this 6
we have to subtract 6 on both sides. So we write subtracting 6 on both sides. On both side. So we get, when we subtract 6 on both sides, we get x plus 6 minus 6 is equal to 17 minus 6. So here in the left hand side, 6 and 6 become cancelled out, that is they become 0, and we get x is equal to 17 minus 6 is equal to 11. So here we get x is equal to 11, which is the solution of this equation. So student, I hope the method, the process by which we done the process of simultaneous operation on both sides. So here the solution is given. In order to isolate the variable x, we have to subtract 6 on both sides. So when we subtract, we get x plus 6 माइनस 6. ऐसा इसलिए देखो, देखिए बच्चे, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं कि 6x के साथ एडेड है, तो हम इसका अपोजिट, इसका रिवर्स ऑपरेशन ऑपरेट कर देते हैं. यहाँ पर x के साथ 6 ऐड है तो हम यहाँ पर 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. अगर ये x माइनस 6 होता तो हम इसमें क्या करते हैं, 6 को ऐड करते हैं. अगर ये 6x होता तो हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं. अगर x अपॉन 6 होता तो हम इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं. मतलब कि जो भी ऑपरेशन दिया रहेगा हम उसका अपोजिट, दैट इज द रिवर्स ऑपरेशन यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे. ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं. तो जब हम यहाँ पर दोनों साइड से 6 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको मिलता है x इज इक्वल टू 11. सो x इज इक्वल टू 11 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन. ओके, चलिए आंसर चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है कि नहीं है. तो दिया हुआ इक्वेशन क्या है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 17, और अभी हमने x की वैल्यू क्या फाइंड आउट की, 11. तो यहाँ पर x के जगह पर जब 11 को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 17. ठीक है, तो 11 प्लस 6 17, 17 इज इक्वल टू 17. दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है. यहाँ से एक बात फिक्स है कि जो हमने x इज इक्वल टू 11 फाइंड आउट किया है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन 110% सही है. ओके स्टूडेंट, सो आई होप it is clear to everyone. Now let us see the next. Let's see one more question. The given question is 6 is equal to 3 multiplied by a minus 3. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हमें आइसोलेट करना है, मतलब कि यहाँ से a को हमको सेपरेट करना है बिकॉज a इज द वेरिएबल. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो जो दिया हुआ इक्वेशन है उसको यहाँ पर राइट डाउन करते हैं. तो 6 इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस 3. तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 यहाँ पर क्या है, इस a के साथ मल्टीप्लाइड है, तो हम क्या लिखते हैं, दोनों साइड से 3 को डिवाइड करने पर यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड. डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड. जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 a माइनस 3 अपॉन 3. यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. सो वी गेट 2 इज इक्वल टू a प्लस 3, सॉरी a माइनस 3. ओके, a minus 3. Again here we can see that 3 is subtracted from a. So in order to separate a, we have to add 3 on both sides. Again we write adding 3 on both sides. Adding 3 on both sides.
So we get 2 plus 3 is equal to a minus 3 plus 3. तो 2 plus 3 is equal to हो जाता है 5 और इधर a minus 0 क्योंकि minus 3 plus 3 मिलकर 0 हो गया। तो ये क्या दिखाता है a is equal to 5. Therefore a is equal to 5 is the right answer. Therefore a is equal to 5 is the right answer. So I hope the solution is clear. Now let us see how we have solved it systematically. Okay, so here the solution is given here. So let's see how we solve. So given that 6 is equal to 3 a minus 3, which is the condition number 1. Here we can see that 3 is multiplied with a by 3, a minus 3. Therefore in order to vanish this 3, we have to dividing both side by 3. Okay, so here we write 6 by 3 is equal to 3 into a minus 3 upon 3. So here 3 and 3 cancelled out and 3 1 ja 3, 3 2 ja 6. So we get 2 is equal to a minus 3. This is the condition number 2. Again here we can see the right hand side of condition 2. My 3 is subtracted from a. So in order to vanish this minus 3, we have to add plus 3 on both sides. So we write again adding 3 on both sides of the condition 2. So we get 2 plus 3 is equal to a minus 3 plus 3. So 2 plus 3 become into 5 and 3 and 3 cancelled out, so we get a only. Therefore the result is a is equal to 5. Therefore a is equal to 5 is the right answer. Okay students, so I hope it is also clear to everyone. Now let's see the second method, which is called transposition method, that is transforming method. So let us see what is the transposition method. Transposition method is that in this method we shall transfer the terms from left hand side to right hand side in order to separate the variable of the given equation. Okay, in order to transfer, here some rule that we have to follow. The rule is very simple, that whenever any number having any sign, when cross the sign of equal, its sign become reverse. That is, here we can write that when plus goes to right side become minus, and when minus goes to left side right side become plus. Similarly, when multiply goes to left right side become divide, and when divide goes to right side become multiply. Okay, and this reversible sign represent that we can move from left to right. Okay, similarly, if we move from right to left, the same transformation is takes place, so that when plus goes to right side become minus. Similarly, when minus goes to left side become plus, when minus goes to right side become plus, and when plus goes to left side become minus, when multiply goes to right side become divide, and when divide goes to left side become minus, sorry, multiply. Similarly, when divide goes to right side become multiply, and when multiply goes to left side become divide. So this is the basic rule that we have to still remember in order to done the transposition method. Because the lack of this knowledge, we cannot solve the solution question by the transposition method. So let's see what is this transposition method says. This method says that the process of moving algebraic term from left hand side to right hand side
and vice versa. The meaning of vice versa, that left hand side to right hand side and right hand side to left hand side is called transposition method or only transposition. The both have the same meaning. Okay, while transferring or transposing the term from one side to an other side of an equation, make the following changes. तो इसमें चेंज आते हैं, वो चेंज कौन कौन से आते हैं? जो प्लस होता है वो इक्वल के इधर माइनस होता है, जो माइनस होता है वो इक्वल के इधर प्लस होता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड होता है, और जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो ये तो भी इसके बेसिक थे, और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा। So we shall meet in the next video with new question. Till then, goodbye.